Okay. So equation of tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 2 at the point 2 comma 4 हमको बताना है. So this is basically they are asking that equation of tangent to any curve at a given point P, and this given point P is on the curve. ठीक है. तो आप देखो यहाँ पर जो 2,4 जो पॉइंट है, अगर आप x की जगह पर 2 रखोगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस दिस इज 6 एंड प्लस 2. तो y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 8 प्लस 2 इज 10 माइनस 6 इज 4. तो ये आ गया आपके पास में. मतलब कि ये जो पॉइंट है जिस पर हमको टेंजेंट पूछा गया है एवेलुएट करने के लिए, वो पॉइंट जो है वो उस कर्व पर है. ठीक है. सो नाउ दिस इज फेयरली सिंपल. वी कैन राइट इट एज अभी देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है. बेसिकली टेंजेंट इज अ लाइन. तो एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए. पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है. नाउ वी वांट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज, let's say this point is P. Okay. So dy by dx हमने evaluate किया. तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का dy by dx हमने निकाला. So that is 3x square minus of 3. Okay. Now the dy by dx at P. तो P जो पॉइंट है वो है 2,4. यहाँ पर तो केवल x इज इक्वल टू 2 ही काम का है, y तो इसमें नहीं आ रहा. तो हमने x की जगह पे यहाँ पर 2 पुट कर दिया. So this is 3 into 4 minus 3. So this is 12 minus 3. So 12 minus 3 is 9. तो हमारे पास में स्लोप आ गया. So now we have slope of the tangent is 9. Point x1 comma y1 जो है वो है हमारे पास में 2 comma 4. So what we are waiting for, we have to write the equation of tangent at P. So y minus y1 is equal to m times x minus x1. So it is simple. Y minus y1 is 4. Slope is 9 that we have evaluated right now. And x minus x1 is 2. So this is y minus 4 is equal to 9x minus 18. So we can write it as y is equal to 9x minus 18 plus 4 is minus of 14. So we can compare it with the y is equal to mx plus c. तो स्लोप तो यहाँ से 9 है और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आ गया आपके पास में -14. ओके. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट 2,4. तो हमको क्या करना पड़ा, बस यहाँ पर y इज इक्वल टू ये जो फंक्शन दे रखा था इसको हमने dy बाई डी एक्स एवेलुएट किया. वो आ गया आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस 3 और उस पर हमने 2,4 पॉइंट पर एवेलुएट कर लिया स्लोप. वो वैल्यू आ गया 9. सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पता है आपको, पॉइंट पता है, दैट इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m. और m को अगर आप लिखना चाहो सो दिस इज m इज dy बाई डी एक्स एट x1 y1. मतलब कि m at p, slope at point p. Okay. So this is clear. I hope so. Okay. Now in the next one we have to find the equation of tangent to the curve y is equal to, now we have a parabola. Okay. And at x is equal to minus half. अब यहाँ पे केवल x क्यों दे रखा है, क्योंकि जब हम इसका dy बाई डी एक्स इवेलुएट करेंगे तो वो आ गया आपके पास में 4x माइनस 1. नाउ एट x इज इक्वल टू हाफ पर जब अगर हम स्लोप निकाल लें तो एट x इज इक्वल टू माइनस हाफ जो है तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस हाफ माइनस 1 विच कैन बी रिटर्न एज -2 माइनस 1 दैट इज -3. तो स्लोप मिल गया आपको एट x इज इक्वल टू माइनस हाफ पर. और आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए तो हमको वो पॉइंट पता होना चाहिए जिस पर कि हमको टेंजेंट लिखना है. तो जब हम x इज इक्वल टू माइनस हाफ यहाँ पुट करेंगे इन दिस, सो y इक्वल टू 2 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर इज 1/4 माइनस ऑफ हाफ इज प्लस हाफ प्लस 5. सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर इज
y इक्वल टू 6। तो अब आपके पास में पॉइंट जो है वो पॉइंट आ गया x1 कॉमा y1 इज माइनस हाफ कॉमा 6। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ पर जो वैल्यू है वो कितना आ गया 6। हमने क्या किया भाई y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑन द कर्व है तभी हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू माइनस हाफ का मतलब है कि ये जो पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ है वो इस कर्व पर है, तो हमने इसमें रख दिया। तो 2 इंटू 1/4 एंड माइनस हाफ एंड माइनस इज प्लस ऑफ हाफ। So this is 2 into 1/4 is 1/2. 1/2 plus 1/2 is 1 plus 5. Okay. तो y का वैल्यू क्या आ गया 6. So now the equation of tangent we can write is simply y minus y1 is equal to slope we have already evaluated, क्योंकि slope में जो है आप देखो जो आपने स्लोप लिखा वहां पर केवल और केवल जो है वो x के टर्म है। तो x का कोऑर्डिनेट पता होने से ही x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता होने से ही काम हमारा चल गया। सो स्लोप इज -3 एंड x माइनस x1। तो x1 जो है वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं माइनस हाफ है, y1 जो है वो भी हम यहीं से देख पा रहे हैं दैट इज 6 है। तो इनकी वैल्यू को हमने आप प्लग इन कर लिया। सो y माइनस 6 इज इक्वल टू -3 टाइम्स x माइनस हाफ, माइनस के साथ मिलके क्या बन गया ये 1/2। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ पर केवल एक कोऑर्डिनेट दे रखा था हमको, तो हमने दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब कि x कोऑर्डिनेट दे रखा था तो हमने y कोऑर्डिनेट इवेलुएट किया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो कर्व गिवन था हमने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उस पॉइंट पर हमने स्लोप को इवेलुएट किया। सो दिस इज द प्रोसेस टू गेट द इक्वेशन ऑफ tangent at any curve on a given point, and that given point is already on the curve. Okay, now in the next one we have to evaluate the equation of tangent to the curve y is equal to x cube at the point 1 comma 1. So this 1 comma 1 is simply we can see that this is satisfying the curve. So x1 y1 is known to us, that is 1 comma 1. Now dy by dx is 3x square. Let's say this point is P. So now dy by dx at P is same as 3x square में x की जगह पर हम क्या पुट करते हैं 1. So what we are getting is 3. So slope पता है, m at P पता है that is 3. x1 y1 पता है that is nothing but 1 comma 1. So equation of tangent is y minus 1 is equal to 3 times x minus 1. If we want to simplify this, this is 3x minus 3 plus of 1, so that what we are getting is 3x minus 2. This is y equal to this. Okay, so I guess this is clear. तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube at the given point, and that given point is 1 comma 1. ठीक है, okay. Now in the next one we want to evaluate the equation of tangent. We want the equation of tangent to the ellipse. Okay, and here ellipse is explained or given parametrically. So x is equal to a cos theta या a cos t is the parameter, and y is equal to a sin t at the point m x1 comma y1 for which t is equal to pi by 4. So if t is already given pi by 4, so if we put t pi by 4, so what we are getting is cos t is 1 by root 2 and sin t is also 1 by root 2. So x1 y1 वो हमको पता चल गया। तो सोल्यूशन x1 y1 जो है, x1 के आगे आपके पास में we have a cos pi by 4 that is a by root 2. Okay, and y1 is a sin pi by 4, so that is there is a slight change. This is not the parametric equation to the ellipse, this is parametric equation to the circle. So if we want to make it for the ellipse without much disturbance, so what we are doing, we are just replacing a by b.
Okay, so this is the slight correction we did. Okay, so now this is representing a ellipse. Okay, so what we did b, a की जगह पे b कर दिया. It is very simple to understand. When we have x is equal to a cos t and y is equal to a sin t, and if we square these two equations, if we square and add them, so what we are getting is x square plus y square is equal to a square. If t is parameter, it means this is representing a circle, okay, whose center is 0 comma 0 and radius is a. Okay, so if we have x is equal to a cos t and y is equal to now b sin t, so now this is representing an ellipse parametrically. Okay, so now if we write it as x by a is equal to cos t and y by b is equal to sin t and square and add them, so what we will get? We will get the equation of the ellipse in Cartesian form, that is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Okay, so now what we want equation to the tangent to the ellipse, that is x is equal to a cos t and y is equal to b sin t at some given point m, that is x1 comma y1, for which t का वैल्यू जो है वो है हमारे पास में pi by 4. So x1 we have, if we plug in the value of t in x, so what we will get? X1. So what we are getting here is a cos pi by 4, that is a by root 2. And if we plug in the value of t in y coordinates, what we are getting is y1, that is b times of sine of pi by 4, which is simply saying b by root 2. So now we have the point, that is a by root 2 comma b by root 2, and now we want to evaluate the slope of the curve at the given point. So now we have a problem simple, that x is a function of t and y is also function of t, and we want to evaluate dy by dx. So this is the application of differentiation, or by the method of differentiation and parametric form of the differentiation. Okay, तो इसके लिए अगर हमको dy by dt पता चल गया और dx by dt पता चल गया, तो उन दोनों का रेशियो लेने पर what we can evaluate is dy by dx. So now what is dy by dt is, so dy by dt, from here we can say that y is equal to, we have b sin t, so the differentiation of y with respect to t is dy by dt is equal to b times of cos of t. Okay, now similarly x is equal to, we have a cos t, so dx by dt is simply we have minus of a of sin t. So from here dy by dx we can say it is nothing but the ratio of dy by dt divided by dx by dt. So what we are getting is b of cos t divided by minus of a of sin t. So what we are getting is b cos t divided by minus of a sin t. So we can write it as minus of b by a of, b by not 2, it is b by a of cos t divided by sin t. So we can write it as cot of t. Okay, so I guess now this is clear. So what we are getting is dy by dx, what we are getting is minus of b by a cos of t. Okay, now we want to evaluate the slope of the tangent for t equal to pi by 4. So as we know, if we put t equal to pi by 4 here, so cot of t is simply 1. So what we are getting, the slope at t equal to pi by 4 is, now we can say that dy by dx at x1 comma y1 is same as saying that minus of b by a cot of t at t equal to pi by 4. So that is equal to minus of b by a, because cot of t at t equal to pi by 4 is 1. Okay, so now we have the slope at p. अगर हम x1 y1 जो point है उसको अगर हम
P से डिनोट कर रहे हैं, और जो x1 पॉइंट है वो आ गया था हमारे पास में, x1 क्या था आपके पास में, x1 था आपके पास में a cos ऑफ t, जिसको हमने एवेलुएट किया था, तो a/√2, और y1 जो है वो आ गया था आपके पास में b/√2. ओके, so now x1 we have is a/√2, y1 we have as b/√2. So now the equation of tangent, y minus y1 is b/√2, and slope is minus b by a, and x minus a by √2. So this is the equation of tangent we are getting for the ellipse, which was given in the parametric form. And now we can say that x is equal to a cos t and y is equal to b sin t. This represent where t is parameter. So this represent an ellipse, and if we want to eliminate the t, so if we square this equation, x square is equal to a square cos square t, and similarly y square is equal to b square sin square t. So we can write from here is that cos square t is equal to x square by a square. Similarly, sin square t can be written as y square by b square, and this is 1, this is 2, and if we add them up, so what we are getting is x square by a square plus y square by b square is equal to sin square t plus of cos square t, that is simply 1. So this represent an ellipse. Okay, so this is the parametric equation of ellipse. तो अगर आपको ellipse इस तरह से गिवन होता तो भी हम सॉल्व कर सकते थे by using the differentiation. So this is about the equation of tangent at any point P on the given curve. So I guess this is clear.